हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का, दैट इज ग्राफ ऑफ मोशन। ग्राफ ऑफ मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन। तो जैसे कि मोशन में आप मोशन को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इन मैथमेटिक्स we take x axis, another we take y axis, and यहाँ पे जो भी आपका फिगर बनेगा that is the graph, x axis and y axis। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम y axis में हम अपना फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को ले लेते हैं, और x axis में हम टाइम को ले लेते हैं, time, and the motion is represented by the graph। तो क्या क्या ग्राफ आपके बुक्स में दे रखे हैं? there are, that is number 1 is distance time graph, distance time graph। number 2 is डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम y एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे, x एक्सिस में टाइम लेंगे, यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हाँ, तो डिस्टेंस y एक्सिस में लेंगे, टाइम x एक्सिस में लेंगे, एंड द ग्राफ, सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, दैट मीन्स टाइम इज इंक्रीजिंग, ग्राफ इज डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट। This is the rest graph, and distance time graph, the graph is like this, the time is increasing, distance is also increasing। So that is there is a speed, that is the slope of this graph is speed। ये ग्राफ रेस्ट का है, ये ग्राफ इसमें स्पीड है, राइट। तो इसको हम दैट इज यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कहते हैं, uniform motion graph। note it down, okay। so this is graph, this is a graph represents rest, and this is a graph represents uniform motion, that is here time increases, distance increases, or you can say distance is directly proportional to time। distance is directly proportional to time। it represents uniform motion, uniform speed, it represents uniform motion, uniform motion। the slope of distance time graph, the slope of distance time graph is speed, speed। so this is your ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये टाइम। suppose if I join like this, O A B, slope equals to, that is tan theta, perpendicular by base, that is AB by OB, AB by OB, and it is
AB is the distance travel, OB is the time. So it is the speed. The slope of distance time graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी उसको हम स्पीड कहते हैं. इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लें, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, the slope of displacement time graph is velocity. उसको हम वेलोसिटी कहेंगे. क्लियर? नोट इट डाउन. यस. For non-uniform motion, बच्चों, the graph is curve line. It is a curve. ये distance, ये time. The graph is not a straight line, it is a curve. तो non-uniform motion में the graph is curved. Distance is not directly proportional to time. Clear? So that is your distance time graph. Next is your velocity time graph. Velocity time graph. Velocity time graph. Velocity time graph. तो velocity time graph एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे. द ग्राफ इज लाइक दिस. सपोज ऐसा ग्राफ है. दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये जीरो है. बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. नेक्स्ट ग्राफ इज ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है. द ग्राफ इज लाइक दिस. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. That is velocity of the body increases, time increases, velocity increases. So increase in velocity, तो it gives the acceleration. इसमें acceleration है और इसमें velocity change नहीं हो रहा है, तो there is no acceleration. Clear? Now in this graph the body is moving with constant velocity, and in this graph the velocity is increasing, so there is an acceleration. Increasing at uniform rate. नोट कर लेंगे. ओके. तो दिस ग्राफ, दैट इज बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, yet it is moving with, that is time is increasing, velocity is increasing at uniform rate. There is acceleration, uniform acceleration. Now in this graph, velocity, speed and time, velocity and time in this graph. Suppose O A. If I join like this, suppose A B, A C, and time is suppose OB. So this graph, because here velocity is constant, no change in velocity, so there is no acceleration. There is no acceleration. There is no acceleration. Right? Now distance equals to, that is speed. Speed equals to distance by time. Distance by time. Therefore, distance equals to speed into time. Speed into time. So this graph, speed into, this is the velocity or speed, and to time, this gives the distance. So
in this graph, the area enclosed under the graph gives distance covered by the body. Distance covered by the body. Note it. In this graph, no acceleration, velocity is constant. So that is speed equals to distance by time, or velocity equals to displacement by time. So distance equals to speed into time. So speed is this one and time is this one. So in this graph, that we find the distance covered by the body. So distance can be find out by calculating the area. So it is, we can write here area equals to, or distance equals to area of this rectangle OACB. Distance equals to area of this rectangle in velocity time graph. Clear? Note it down. So therefore distance covered equals to length into breadth. So length, that is velocity, is OA into OB. तो इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. एक ग्राफ आपको दे देगा इस तरह से, वैल्यू आपको दिया रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. सो यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द एरिया एंड you can get the distance. If velocity is given, then displacement. If speed is given, then it is displacement. Now also this graph, that is velocity and time, the graph is straight line. That's when body moves with, when body moves with uniform acceleration, when body moves with uniform acceleration, then VT graph is straight line, passing through origin, straight line passing through origin, Yet velocity is directly proportional to time. The velocity is directly proportional to time. At uniform rate, the velocity is increasing. Velocity is increasing at uniform rate. Velocity is increasing at uniform rate. So it gives the acceleration, and acceleration how we can find out बच्चों? Acceleration A equals to slope of this graph. तो slope के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक perpendicular बना लेंगे, ओ ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, right? तो slope is again perpendicular by base, so that is AB by OB. AB by OB, that is the slope, and this slope is your AB क्या है, that is change in velocity. AB क्या है, change in velocity, and OB क्या है, time taken or time interval. So when the body moves with uniform acceleration, the slope of the VT graph gives the acceleration. Please note it down. Okay, bachcho. So the slope is gives the area. Now the distance travel
by the body, the distance traveled by body is given by the distance traveled by body is given by, that is distance equals to area covered, area under the graph, area under graph. So half of this triangle, body moves from O to A, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. और हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे ऐसा, लाइक दैट. तो मान लेते ये O है, ये C है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ रेक्टेंगल होगा, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज OC इंटू OB, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको कोई एक फिगर दे देगा, कहेगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो यू हैव टू यूज सिंपल फार्मूला, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ. क्लियर? नोट इट डाउन. नाउ इन दिस केस द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. नाउ नेक्स्ट ग्राफ सपोज ऐसा भी हो सकता है, नेक्स्ट ग्राफ that is next graph is that velocity time graph like this. ये आपका velocity है, ये आपका time है, अगर ये 0 है, it starts from here BC. the body has initial velocity. यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है body has initial velocity 0. यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब body के पास कुछ initial velocity है. क्लियर? तो इसमें भी हमको सेम आइडिया है. How we can find the distance traveled by the body or distance covered is equals to area under the graph, area under graph. तो कैसे हम एरिया निकालेंगे, तो बच्चों हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे लाइक दैट, इस तरह से. तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा. ट्रेपीजियम में ये दो पैरेलल साइड्स हो जाएंगे एंड ये हाइट हो जाएगा. दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, into distance between them, perpendicular distance between them. So that is half into sum of parallel sides OB plus DC into distance between them OD. Please note it down. Yes. Now also in case of non-uniform motion, the graph will be that is velocity time graph will be curved line like that. That is non-uniform acceleration, non-uniform acceleration. That is velocity is not directly proportional to t, that is called non-uniform acceleration. इसमें भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं by the same formula. Distance covered by the body is area under this VT graph. क्लियर? तो इसमें स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड is changing at non-uniform rate. So these are the graph in class 9th. Distance time graph, rest graph, uniform motion graph. यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि मूविंग बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन बॉडी इज मूविंग विथ योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, body is moving with uniform acceleration, uniformly acceleration, and as body is moving with non-uniform acceleration. Clear? Please note it down. Yes, but you'll see this graph.
speed time graph. The graph is given like this. OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट OA रिप्रेजेंट्स. OA it represents uniform acceleration. Uniform acceleration. टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, तो देयर इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A. ए भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड 6 की रफ्तार से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड एंड नो एक्सेलरेशन. एंड BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? BC दैट इज डिक्रीजिंग स्पीड, तो नेगेटिव यूनिफॉर्म है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. इससे इट इज रिटार्डेशन. क्लियर? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड इससे रिटार्डेशन. नाउ वैल्यू आप निकालिए एक्सेलरेशन की वैल्यू के क्या निकल. द स्लोप ऑफ OB गिव्स द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन दैट इज AD कितना है? 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज एक्सेलरेशन. Now what is the area covered here? When the body moves with constant velocity, what the area covered is during AB is equals to distance covered, distance travel in this part, and the retardation minus A is again slope by distance. So BE means 6/6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन. अगर पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कब है, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल के सबको जोड़ देंगे, तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्लास 9. तो यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. ओके बच्चों, थैंक यू. पढ़ते रहिए.